Hello everybody. In this video I am going to discuss about the DNA fingerprinting. The DNA fingerprinting is a biotechnological technique in which we determine the mini satellites found in the genome of a human being, and these mini satellites give us the clue about the VNTRs and the single nucleotide polymorphism which exist in the DNA of different individuals of the same species or the different species. So technically we analyze about the mini satellites, and the mini satellites are the short nucleotide sequences which are found in a DNA molecule. Now let us see what are the different steps and details about this DNA fingerprinting. This DNA fingerprinting was first of all discovered by Professor L.S. Jeffrey in the year 1984. Now let us see the steps which are being followed during the process of DNA fingerprinting. Alright, so these are the steps. I hope that screen is visible to all of you. Now the first step is the isolation of DNA from the given sample. Say for example the sample is the blood. The second step is we have to digest the isolated DNA with the help of certain restriction endonuclease enzymes. They are called as molecular scissors. The third step includes the separation of digestive fragments by gel electrophoresis, and then fourth step is blotting, in which we transfer the separated DNA from medium to the nitrocellulose paper or nylon paper. And then fifth step is the hybridization process, in which we hybridize the separated DNA with labeled VNTRs probes. And the last step, that is the sixth step, is the analysis of the hybrid fragments by using autoradiograph. Now these are the 6 steps which are being followed during the process of DNA fingerprinting. Okay, let me show you one diagram here which will give us the clue about the process which is being followed during the whole process of the DNA fingerprinting. Alright, so let me come back here. Okay, so here is the diagram. I hope it is okay. Let me take the diagram here. Alright, so this is the diagram. Okay, let me rearrange the diagram first. Okay, I hope this diagram is clearly visible to all of you. Alright, so these are the 6 steps, and these are the 6 steps which are being depicted in these diagrams. Now first step is a DNA sample which we have taken here. Maybe it is the blood, and in the first step we have to extract out the genome. So this is technically the genome, that is a whole DNA of the sample. So there are technique for isolation of the genome from the sample, and that I am not going to discuss here. And then this genome is cut with the help of certain restriction enzymes, and then the DNA fragments are formed. So these are the DNA fragments. These are DNA fragments. And then these DNA fragments are separated through gel electrophoresis, in which the longer bands, say for example if it is the long DNA, then small, then small, then small, like this. According to the size of the DNA molecules, these DNA fragments are separated, and this gel electrophoresis tray is connected to minus terminal at one end, and it is connected to the plus terminal at another end. And then
This is the blotting technique. So in the blotting technique, the DNA fragments are transferred from the gel. So this is the gel, and this is the nylon membrane. Now the DNA fragments are found on the nylon membrane, and this is what we call as blotting. And then we are adding certain probes, radioactive probes of known nucleotide sequence to this gel, and then finally we are analyzing the DNA fingerprints, and we analyze the mini satellites which are being developed by hybridization of the radioactive probes with the DNA which is present on the nylon membrane. Alright, so this was the systemic representation of diagrammatic representation of the steps of DNA fingerprinting. Alright, now let us draw this step one by one. So let us assume that this is the sample. Maybe blood is there, or hair is there, or skin is there. So this is the sample. We take out the whole genome. Let me show you the whole genome with the help of this color. So this is the whole genome, that is the DNA, total DNA content. Then we cleave this DNA with certain restriction endonuclease. And this DNA will be fragmented into small or life-sized DNA fragments, but they are again double-stranded here. Then finally what we do, we take these DNA fragments to a tray, and this tray contains a gel, and this step is called as electrophoresis. So the gel can be of two types, agarose gel, or it can be polyacrylamide gel. If this gel is agarose gel, then the electrophoresis will be AGE. We call it as agarose gel electrophoresis. If the gel is polyacrylamide gel, then we call it as PAGE. This type of electrophoresis becomes PAGE, polyacrylamide gel electrophoresis. We connect this gel tray with electric current, that is minus on one side and plus on another side, and we place these DNA fragments here. According to this, these DNA fragments have been placed. When we run the electric current by connecting these both with certain power switch, so when the electric current is run in the gel tray, then the electrons move from negative to the positive terminal, and so these DNA fragments get separated according to their size. And here in the tray, or before treating it with before taking these DNA fragments to the gel electrophoresis, these are the DNA fragments. So in this electrophoresis tray only we can treat it with NaOH or heat shock, so that the double-stranded DNA fragments become single-stranded DNA fragments. Alright, so now these DNA fragments are being separated on the gel electrophoresis tray. Now the next step is the blotting. It is the blotting step, and let me show you the diagram of the blotting step again here. So alright, so this is the diagram pick for the blotting.
I hope it is visible to all of you. So this tray I have shown you in a vertical section, vertical place. So this is the gel electrophoresis tray. This is the gel, and then we have placed a platform here also. Whatman paper is there, and these are the sequences of the different types of membranes which we have used. So this is the gel. Just above the gel we have got membrane, and this membrane is actually the nylon membrane. This is the nylon membrane, and just above the nylon membrane we have placed this red one, Whatman paper stock, and this is the filter paper, then paper towel, and then weight. So what will happen, this buffer, transfer buffer which is present in the tray, will move through the platform and then will rise up. This buffer will rise up like this. So we know just above the gel we have the DNA fragments, because this is the gel, we have the separated DNA fragments. So these DNA fragments will rise up from the gel and will stick to the under surface of the nylon membrane. So finally what we do, we take out this nylon membrane here. So we take out the nylon membrane, and then this nylon membrane contains the single stranded DNA fragments which are been struck on the membrane. So they are the DNA fragments. Okay, so they are the DNA fragments on the nylon membrane. So here we can label it. This is the nylon membrane, and these are the DNA fragments. Alright, so this technique is called as blotting technique, in which we are transferring the DNA from the gel onto the nylon membrane. This is what we call as blotting technique. Now we develop certain probes here. So these are the radioactive probes of known nucleotide sequences. Say for example, if we have got A and T here, or C or G, like this we can have. So these are the radioactive probes. So certain radiations are emitted from here, and when these radiations fall on some screen, maybe this is the screen, then T will have separate band on the screen, and the radiation coming from the A will have separate shape of the band. So there is a shape of the band which is different. So by identifying these shapes, this is this X-ray film, maybe X-ray film. By analyzing the bands, these are the bands, we can find out whether this band is coming from T or A. This already we have done it. So these radioactive probes are released on the DNA, and then through shakers, these membranes, these radioactive probes, the radioactive probes, will go and bind to their respective places. Say for example, if AT comes and bind to this place, we know it is A, we know it is T, so definitely this in front of A there will be T, in front of T there will be A. So like this we can find it out. This is probe hybridization. This is probe hybridization, and like this for every probe there will be DNA fragments, and all the DNA fragments will be hybridized. Okay, so now we can write it. Say for example, if it is T or A, so we can write it A T. Say for example, it is G C C, so this will be C G G, like this. So we can write from bottom to the top. This will be the first strand of the DNA, and then we can find out the second strand after probe hybridization. And this probe hybridization is possible because of the this technique, because we are hybridizing the radioactive probes to the single stranded DNA, and this is what we call it as autoradiography. We call it as autoradiography. Okay, finally after autoradiography, the first strand of the DNA will be there, and then we can find out the second step through certain software. So this is the DNA which we need to
find out the nucleotide sequence and or the mini satellites, and then we can go for the analysis. All right. So these are the different steps which are being followed to find out the nucleotide sequence of the given DNA or given genome, and then we can find out the mini satellites which are found on the genome. Now coming on to the application part of this DNA fingerprinting, then we can come around the application part, and this is how we can say. All right, so these are the different applications or uses. So DNA fingerprinting is used for DNA analysis in forensic science. Forensic science this means if certain murders occurs, and then we can find out the samples like blood or hair, and then we can find out the mini satellites found on them, and then we can match it with the suspects. And then DNA fingerprinting help in paternity test. That means किसका बच्चा है, कौन सा है, ये सब चीजें we can detect through DNA fingerprinting. And it is also used to find out the frequency of particular gene in a population, and then we can trace the evolution. So there are the different applications of DNA fingerprinting. So now I am just revising this DNA fingerprinting in Hindi, so that those who have come from Hindi background can also understand the concept. DNA fingerprinting जो थे वो सबसे पहले प्रोफेसर एलिस जेफरी ने 1984 में ढूंढी थी। ये बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के छोटे छोटे मिनी सैटेलाइट्स यानी कि उसके अंदर पाए जाने वाले एक फिक्स्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मेनली 6 इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको काट देते हैं किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स को हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर देते हैं। चौथे स्टेप में हम लोग उसको उन फ्रेगमेंट्स को नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। और 5वें स्टेप में हम लोग प्रोब हाइब्रिडाइजेशन से VNTR प्रोब हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या हैं। और फाइनल स्टेप होता है पूरे के पूरे सेगमेंट का हम लोगों ने उस पूरे डीएनए का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस क्या है और उसके मिनी सैटेलाइट्स कैसे बनेंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे सपोज करो कि हमने ब्लड लिया है, ब्लड का डीएनए बाहर निकाल लिया और डीएनए को कट करके हम लोगों ने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लिए। ये कटिंग होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। इन फ्रेगमेंट्स को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करते हैं, जिसमें लार्ज से लेकर स्मॉल साइजेस तक डीएनए सेपरेट हो जाता है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे से हम लोग उसको नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉटिंग। और ब्लॉटिंग के बाद हम लोग रेडियो एक्टिव प्रोब्स इसमें डाल के हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं, और उसको हम लोग एक्सरे फिल्म के ऊपर टेस्ट करके रिडेक्ट करके डीएनए की सेगमेंट को हम पता लगा लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है। ये एक सिंपल वर्जन है जो कि मैंने हाथ से बनाया है कि हम लोग सैंपल लेते हैं, उसका डीएनए निकालते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं, NOH ट्रीट करा के उसको सिंगल स्टैंडर्ड कर लेते हैं। उस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे पे सेपरेट कराते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे, इसमें जेल लिया हुआ है, जेल को एक साइड से हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। अगर हम लोग ने जेल एग्रोज जेल लिया है तो हो जाएगा हमारे पास एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर हमने पॉलीक्रोमाइड जेल लिया यहाँ पर तो फिर हो जाएगा पेज। ये जेल जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उनके साथ साथ डीएनए भी हमारा सेपरेट हो जाता है। जब डीएनए सेपरेट हो जाता है तो हम लोग उसको ब्लॉटिंग करते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा ट्रे है। इस ट्रे के ऊपर हम लोगों ने सेटअप डालते हैं, जिसमें नीचे एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर जेल आ जाता है। जेल के ठीक ऊपर हम लोग नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन मेम्ब्रेन रखते हैं, उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर्स रखते हैं, और फिर टॉवल पेपर्स और वेट। तो जो यहाँ पर बफर होता है, सॉल्यूशन होता है, वो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो वो डीएनए को जो कि जेल के ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ जेल के ऊपर डीएनए था ना, उस डीएनए को ऊपर की तरफ खींचता है, उठा देता है, और वो नायलॉन मेम्ब्रेन से जाकर डीएनए चिपक जाता है। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर जेल से डीएनए को नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफर किया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हम डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग के बाद हम लोग नायलॉन मेम्ब्रेन को निकाल लेते हैं। उस नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग रेडियो एक्टिव प्रोब्स डालते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब्स छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े होते हैं जिसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हमको पता होती है। उसमें से हम लोगों ने रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लगाया होता है, जिससे हम लोग उस बैंड को एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन निकलेंगी, उसको एक्सरे फिल्म पे डाल के देखते हैं तो बैंड्स बनती हैं। उन बैंड्स को हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कि कौन से न्यूक्लियोटाइड की कैसी बैंड बनती है, और इस टेक्निक को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी।
तो फिर हम लोगों ने ये रेडियो एक्टिव प्रोब्स को नायलॉन मेम्ब्रेन पे डाला और हाइब्रिडाइज करा, जिसको बोलते हैं प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रैंड डीएनए की एनालाइज करते हैं फ्रॉम स्मॉल सेगमेंट टू द लार्ज सेगमेंट, और फिर दूसरी स्ट्रैंड हम लोग सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें फॉरेंसिक साइंस में, पैटर्निटी टेस्ट में, जीन पर्टिकुलर जीन की फ्रीक्वेंसी को पता करने के लिए और इवोल्यूशन को ट्रेस करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और लुक फॉरवर्ड, मैं पूरा का पूरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो इस बार का सिलेबस है 5th सेमेस्टर का, वो पूरा का पूरा एक टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ रहा हूँ। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।